So in Java, it is a possible to assign a subclass object to the base class. You cannot assign the base class reference to the subclass. So in Java, what happened? So we assign the subclass object. When you are creating a child class object, that object we can assign in the base class. But you cannot assign the base class reference to the subclass. Okay, base class reference you cannot pass to the subclass, but subclass reference you can pass to the what base class. So Java support. So therefore, it is necessary to convert from one type to the another. Means you have to convert the one object to the another type. So Java support the following type of casting: typecasting of primitive type and typecasting of object. So two type of casting it is supported. One is typecasting of the data types or typecasting of object. So now we go for it. There is two type of casting we are using. Cast means to convert one type to the another type. To convert one type to the another type, we are using casting. It is happen like some kind of implicit casting is there, which is automatically converted to one type to the another type. Another is explicit casting is present. In the explicit casting, which is not directly converted to one data type to the another data type. So implicit casting refers to automatic conversion of one data type into another data type. It occurs if both the data type are compatible with each other. Mane, they are belongs to one family. Suppose if you define a integer int a equals to 100, it is a integer type. So integer value can be stored into a long. So long is the bigger than the integer. So you can store the integer value into the long. Explicit casting occurs when one data type cannot be implicitly converted to the another data type. Okay, so it is not converted to the another data type automatically. So in that scenario, we're using explicit casting. So एठी हमर कौन हला int a equals to 100. तो इंटीजर वैल्यू टाको मु ऑटोमेटिक कौन कली लॉन्ग वैल्यू रे मु स्टोर कर देबी कारण लॉन्ग इज द बिगर देन द इंटीजर. Explicit casting occurs when one data type cannot be implicitly converted to the another data type. माने automatically से converted हेई परिबोनी. In the case of explicit casting, you must convert the data type into the compatible type. Got it? बुझियला दिन सर? Again, sir. Now what happens? If you want to store the integer value into the byte, so byte is the smaller than integer. So if you want to store the integer value into the byte, in that cases, we go for explicit casting. So how you go for explicit casting? int a equals to 10, then we are defining byte. Byte b equals to, we convert integer into a byte. So in the bracket, we are passing a, which is a integer value, which is converted into the byte and stored in the b object. So it is called as the explicit casting. Okay, it is called as the implicit casting. Here we are not using any kind of method, it is directly converted to the another data type. But here, by using some method, we convert one data type to the another data type. So that is called the explicit casting. So in this part,
Now consider the following code snippet. So this one is called as the explicit casting. Clear? Any doubt in this part? Romejit, yes. Nice, sir. No, sir. The similar way, it is a casting we perform on the basis of primitive data type. Now we go for casting into the object type, class object type. The casting of object reference depend upon the relationship of the class involved in the same hierarchy. Okay, so you go for object casting if the objects are present in the if the classes are present in the same hierarchy. Hierarchy means if they are present in a same relationship, parent-child relationship must be there. Any object reference can be assigned to the reference variable of the object type. So there are two type of casting we're using in the object. One is upcasting. Another is we're using downcasting. Upcasting is usually done along with the class hierarchy in direction from derived class to the base class. Upcasting is usually Good evening, sir. good Good evening. evening. Upcasting is usually done along with the class hierarchy in direction from derived class to the base class. So you have to create a object of class. So this is the upcasting. Means you have to create a object of employee class and you are giving a reference to the child class. It is called the upcasting. Means by using a parent class object, you can call all the functionality of the child class. Okay, so here employee is the parent class. So for the employee, I am creating a two objects. One is employee one, another is employee two. Another object we're passing manager object, manager MGR, new manager, supervisor is equals to new supervisor. So two objects we're creating. So employee one equals to manager, employee two equals to supervisor. Means manager object we are passing to the employee object, supervisor object we are passing in the employee two. Now by using of employee one and employee two object, we can call all the function that is present in the child class, that is present in the manager and supervisor. Clear? Yes, sir. So now I go for the example, then you have the clear idea on that, how this casting is performed. Sir, casting ଟା actually ଦରକାର କୋଉଥିପାଇଁ ମାନେ କୋଉ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦରକାର हो Casting ଯେତେବେଳେ ଦେଖ ତୁମର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଡାଉନ୍ କାଷ୍ଟିଂ କରିବା ସେତେବେଳେ ଆମକୁ ଦରକାର ପଡିବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ ର ଅବଜେକ୍ଟ ବନେଇବା ଆଉ ସେଇ ଅବଜେକ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ମାନେ ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ଲାସ ର ଅବଜେକ୍ଟ ବନେଇବା ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ଲାସ ର ଅବଜେକ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ ର ଫଙ୍କସନାଲିଟି କଲ୍ କରିବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ୟାରେଣ୍ଟ କ୍ଲାସ ର ଫଙ୍କସନାଲିଟି କଲ୍ କରିବା ଆଜ୍ଞା ଚାଇଲ୍ଡ କ୍ଲାସ ର ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଫଙ୍କସନାଲିଟି କଲ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛେ ସେତେବେଳେ କାଷ୍ଟିଂ ଦରକାର if there is a relationship between the parent and child class then you have to only retrieve the common factor which is present in both parent and child. If there is some uncommon factor is present, uncommon factor you can say the function or variable which is not present in the parent and child, so you cannot retrieve it. So for getting that uncommon value means which is not matched, so in that cases you require a casting. ଆଜ୍ଞା sir माने जो भ्यालु गुड़ाक अनकमन थी माने केवल चाइल्ड रे थिबो किंतु पेरेंट रे नथि पेरेंट रे थिले तो सब चाइल्ड एक्सेस कर परिबो किंतु चाइल्ड रे एमिति किछि फंक्शनालिटी थिबो केवल किछि जिंस किछि फंक्शनालिटी केवल पेरेंट रे थिबो आ गोटे जिंस केवल चाइल्ड रे थिबो माने पेरेंट रे सेटा नथिबो तो से फंक्शनालिटी हम केमति कॉल करियो बाय यूजिंग ऑफ चाइल्ड ऑब्जेक्ट. So in that cases we go for a casting means down casting. Off casting it is automatically happen. Okay, so there is no need to but define or use any kind of functionality here. Okay. ଆଜ୍ଞା sir ବୁଝିଲି So now we go for the example for the off casting.
just 1 minute. Okay, so now we start with discussing class employee public void work function. Then class manager extends from employee, so it is having a work function. Okay, so employee रे हमर रहितला work function, manager रे भी रहिला work function, माने देखो दीटे जगह हमर work function रहिला. So now I am calling the parent class function into child class. Parent class function टाको मो child class रे call कली. super dot work एटा call कली. तापर एटा parent class function एठी call करियार. तापरे एठी देखो आउ गोटे class रहिला worker. Okay, manager extends from employee, worker extends from employee. एठी भी रहिला work function. देखो work function parent class रे रहिला, child class रे रहिला. child class रे जते बडो work function रहउची मेथड हमर ओवरराइडिंग हला. we are giving a new functionality. तापर देखो आमे कोन कले फर्स्ट एम्प्लॉय क्लास रे गोटे ऑब्जेक्ट बनेले em आउ गोटे ऑब्जेक्ट बनेले s. तो दीटा ऑब्जेक्ट बनेले गोटे em बनेले आ गोटे s ऑब्जेक्ट बनेले. ओके, देन आमे मैनेजर क्लास रे ऑब्जेक्ट बनेले. मैनेजर m इक्वल्स टू न्यू मैनेजर, वर्कर w इक्वल्स टू न्यू वर्कर. तो देखो आमे दीटा ऑब्जेक्ट बनौचे गोटे एम्प्लॉय क्लास रे ऑब्जेक्ट बनेले em आउ गोटे बनेले s ऑब्जेक्ट. आउ चाइल्ड क्लास रो दीटा ऑब्जेक्ट बनेले मैनेजर m एंड वर्कर w. तो em इक्वल्स टू m, s इक्वल्स टू w, माने m रो ऑब्जेक्ट को मु em रे स्टोर कली, मैनेजर ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट को मु em रे स्टोर कली, वर्कर ऑब्जेक्ट को मु s रे स्टोर कली. तो em डॉट वर्क फंक्शन जते बेले मु कॉल करिवि ताले मोर कोटा कॉल हबो एम्प्लॉय em डॉट वर्क हेले em टा कहा को रेफरेंस देइछ. em टा रेफरेंस पाइछि कहा ठारो ना मैनेजर ठारो रेफरेंस पाइछि. ताले से मैनेजर क्लास रा फंक्शन टा को कॉल करिवो, ए क्लास रा फंक्शन टा को कॉल करिवो. ए क्लास रा जते फंक्शन टा को कॉल करिवो से ऑटोमेटिक एम्प्लॉय क्लास रा फंक्शन टा को कॉल कर दो. जेतु हमें एठी सुपर डॉट वर्क लिखि जे एम्प्लॉय क्लास रा फंक्शन टा कॉल कर दो. देखियो आई एम एन एम्प्लॉय, आई एम मैनेजर. तापर जते बडे मु लिखिबी s डॉट वर्क, s हेले मो कहा को रेफरेंस देली एम्प्लॉय क्लास रे रेफरेंस देली s डॉट वर्क. तो s डॉट वर्क का मु जते कॉल करिवि ताले से ऑटोमेटिक कोन करिवो कहा को कॉल करिवो ना वर्कर वर्क फंक्शन टा को कॉल करिवो आई एम वर्कर. ओके, बुझियला? आज्ञा सर. माने पेरेंट क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेले चाइल्ड क्लास पेरेंट रो ऑब्जेक्ट बनेले चाइल्ड रो ऑब्जेक्ट बनेले. चाइल्ड रो ऑब्जेक्ट को आनी कि पेरेंट रे रेफरेंस दे देले आ सेही रेफरेंस रे पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट थ्रू रे चाइल्ड क्लास फंक्शन टा को कॉल कले. सो दिस इज कॉल्ड एज द योर ऑफकास्टिंग. एटा को जबो ऑफकास्टिंग. इट इज वेरी इजी एंड ऑफकास्टिंग. So I am an employee, I am manager and I am worker. तो एम्प्लॉय टा केमती कॉल होला जेतो सुपर कीवर्ड हम एठी यूज कले सुपर डॉट वर्क यूज कले ताले एटा देखला आई एम एन एम्प्लॉय ताले आई एम मैनेजर कॉल होला तापर वर्कर कॉल होला. बुझियला? एनी डाउट रमेश? नाइ सर बुझे हला. बाकी हम एते जिंस काई करले एठी
एटा केमती अपकास्टिंग केमती होची हम खाली देखिले बुझियो फास्ट दीटा तो हमें कॉल कर देला बेलकू माने प्रिंट हे जाउची स्टेटमेंट एम्प्लॉय और मैनेजर स्टेटमेंट प्रिंट हेला और वर्कर क्लास जो हमें कॉल एक्सटेंड करी अपकास्टिंग ता हमर दरकार नै किंतु हमें गोटे फंक्शनलिटी अछि बोले में एटा गोटे एग्जांपल ले देखिले सो देयर इज नो नीड ऑफ ओ सेया कोच सेटा तो दरकार ही नथिला दरकार ही नहीं सो आज बिकॉज़ व्हाट हमें जदी डायरेक्टली भी चाइल्ड क्लास रो ऑब्जेक्ट बने की कॉल कर देते एटा बुझियो हां मु सेटा कहथली हम एते जिंस लिखले तो तीटा जिंस अछि गोटे अपकास्टिंग अछि गोटे डाउनकास्टिंग अछि अपकास्टिंग हम देखु जेम देखो डिस्ट्रक्टर देयर इज नो वर्क ऑफ डिस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर कोडी एक्जिस्टेंस ही नहीं किंतु जेहेतु डिस्ट्रक्टर अछि हम तार एक्जिस्टेंस लिखे हो बोल आज्ञा बुझिला आज्ञा सर तापर हमें पढ़िबा व्हाट इज द डाउनकास्टिंग सर से सेम प्रोग्राम डर डाउनकास्टिंग हे पर थांदा की नहीं सेमती एमती एग्जांपल नबा सही सेम एग्जांपल ले हबन सेम एग्जांपल ले हबो किछ असुविधा नहीं हम देखिबा आज्ञा सर the downcasting usually done along with the class hierarchy in a direction of base class to the derived class तो हमें इथे एम्प्लॉय क्लास रा ऑब्जेक्ट बनेले तापर हमें रेफरेंस दउचे चाइल्ड क्लास को सो इट इज अ व्हाट अपकास्टिंग एटा कोन होतला इट डायरेक्टेड टू द अपवर्ड इज अ डाउनकास्टिंग means we are creating a object of employee class object of parent class and giving a reference to the child class parent class रा ऑब्जेक्ट बनेवा रेफरेंस दवा चाइल्ड क्लास को तले से ऑब्जेक्ट कहा को रेफरेंस देला पेरेंट को आ किछि देलानी से रेफरेंस देला चाइल्ड क्लास को आ से जो ऑब्जेक्ट रे हमें जदि फंक्शनलिटी को कॉल करिवा से ऑब्जेक्ट थ्रू रे से कोन करिवो जो फंक्शनलिटी केवल पेरेंट आउ चाइल्ड रे अछि से फंक्शनलिटी कॉल करिवो हमें जो कहउचे ब्रांच ऑफिस हेड ऑफिस suppose it's just like a franchisee so I'm doing a business I'm taking a franchisee okay so मोटे XYZ company रो franchisee नेली and I have to obey the rule of that franchisee so when I use that brand name so what are the rule and regulation is there I have to follow but it is not like that हमें जेमति कि देखि परिबा suppose the Reliance phrase. If you take the Reliance phrase is present at Bhubaneswar. The Reliance phrase is present at Cuttack or other district. So it is differ. Same company, but the products are different. Why? Depending upon the customer requirement. So they obey the rules. जहाँ rules अच्छे से मैंने rule obey कले. But how to deliver it? मु केमती deliver करिए? So that is the important part. Okay, way to represent. So that is the important part when you go for what franchisee and franchisee business. Okay, जेमते कि हमें कहिबा हमें बिरयानी खाइबा the biryani chicken biryani is having same feature same flavor but when you are going to the Mayfair the way of they deliver तो जो वे रे से माने deliver करंती and the biryani you are getting from the street side
the way they are delivering, it is different. It is completely different ରହିବ. ଟେଷ୍ଟ ଟା କିନ୍ତୁ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ସାଇଡ୍ ର ଭଲ ଲାଗିବ ନା. ନାଇଁ, it is a better, but delivering. Okay, so when you are Yes. going to the restaurant, okay, it's just like what you go for the haircut in a normal what salon, and you are going to the parlor. Okay, in Yes, sir. normal salon, when you go for a shaving, okay, so it will what affect you. Okay, podibo gala podibo Aye. isu. And when you are going to the what parlor, tame soiki rahibo. Okay, so comfortably. Rahibo. So you don't know when the things are over. Okay, I guess. but when you are going to the salon, just you are just sit in a what war chair, and you are just fighting. I guess, sir. So that is a delivering. Okay, so similar way I guess. एठी कौन हम जेता आमे डाउन कास्टिंग में एते एग्जांपल काई देली ना डाउन कास्टिंग हमें जेता करबा पेरेंट क्लास रे किछि फंक्शनलिटी रहइबा और चाइल्ड क्लास रे किछि फंक्शनलिटी रहइबा. तो ए केस रे हमें जेता फंक्शनलिटी को कॉल करबा से फर्स्ट पेरेंट क्लास रो ऑब्जेक्ट हमें बनेबा से रेफरेंस ऑफ चाइल्ड क्लास को. वी हैव टू क्रिएट ए ऑब्जेक्ट ऑफ पेरेंट क्लास. It is giving a reference to the child class, and through that object if you want to call all the functionality through that object, if you want to call all the functionality of the child, it is not called. The child रे गोटे फंक्शन अछि सपोज डिस्प्ले फंक्शन चाइल्ड रे अछि, आ गोटे फंक्शन अछि डिस्प्ले अछि पेरेंट रे. तो मु पेरेंट क्लास रो ऑब्जेक्ट बने की चाइल्ड क्लास को रेफरेंस देबी. सेही ऑब्जेक्ट थ्रू रे मु केवल जो फंक्शन टा दुई जन के भीतर कॉमन अछि से फंक्शन टा को कॉल करि परिबी. किंतु जदि चाइल्ड क्लास रे आ गोटे एक्स्ट्रा फंक्शन अछि, शो फंक्शन गोटे अछि, ताकू जदि मु कॉल करबा को चाहिबी ताले हबोनी. तो सेति पई कोन करिया पड़िबो, मते चाइल्ड क्लास रा आ गोटे ऑब्जेक्ट बनेया को पड़िबो. से ऑब्जेक्ट थ्रू रे मु जेके कॉल करबी. जदि मु चाइल्ड क्लास रा आ गोटे ऑब्जेक्ट बनेबी, so there is not kind of relationship. But a relationship, I'm not using that franchise logo. Okay, I do. So I do a dealing that dear Reliance, in our locality, so there is a heavy demand on suppose you can say dahi vada. So I want to sell that dahi vada in our but part. Okay, and but in a snacks part. So they thinking for the race, it is good. So they approve. So you use my logo over there. से माने किनिले से ता लोगो बने की से तार बिक्री कला. बुझी होची जेम देख हमें रिलायंस को जीवा, so we are not getting a product only Reliance. So there is a different products are available. बुझी होची Lux Savan अछि, then Patanjali अछि, but they are under in the what Reliance building. Okay, because they are tie up with that, so we are tie up with that. तो सेति बेले हमको डाउन कास्टिंग करे पड़िबो. डाउन कास्टिंग कले कोन हबो, by using that object I call all the functionality of the child which is not present in the parent. Okay, so by using of that object you can call the functionality of the parent and child, which one is the common and which one is the not common. By using of downward casting you can call it. बुझियला? आगे तो एबे हमें जिबा एग्जांपल को, then you have to clear.
class employee, then manager extends from employee. The class is employee, then we're defining manager is extends from employee. Okay, so manager is a child class, employee is the parent class. Here work function is present, here also work function is present, means function is override, means common function is present. But if you see that in the child class another function is present, that is called the manage function. ଆଉ ଗୋଟେ function ଅଛି manage function, ବୁଝିଗଲା? ଆଜ୍ଞା तापर मु एम्प्लॉय क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेली, रेफरेंस देली मैनेजर क्लास को, एम्प्लॉय क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेली, रेफरेंस देली मैनेजर क्लास को. सेही ऑब्जेक्ट रे मु जेतरा वर्क फंक्शन को कॉल करिवि ताले से काहा को कॉल करिवो, को वर्क फंक्शन को कॉल करिवो, पेरेंट रो वर्क को कॉल करिवो ना चाइल्ड रो वर्क को कॉल करिवो? चाइल्ड रो वर्क को कॉल करिवो, कारण से रेफरेंस चेंज हैला कोटी रन टाइम रे. So at the runtime it change the reference. Employee EM equals to new manager. So EM dot सर work. एटा एमिति न लेखि कि रेफरेंस टा स्टार्टिंग रे जेमति रेफरेंस टा कहतिले सेमति आदि लिखथांदे. सेमति हेले हमें रिलेट करि परिबानी. We are not having that franchisee and what main business. हमें एम्प्लॉय क्लास रो गोटे ऑब्जेक्ट बनै थांदे, मैनेजर क्लास रो ऑब्जेक्ट बनै थांदे, तले मोर दुईटा ऑब्जेक्ट ठीक गला. मु एटे गोटाय मेमोरी एलोकेशन रे सब जगह काम कर देबी. बुझिला? ओह बुझिले आज्ञा सर आज्ञा सर. When you are creating a object means it is allocating a memory. आज्ञा सर. So employee EM equals to new manager, EM dot work function. So when I write EM dot work function, then it is called the function of child. Child class of function call करिवो. तापर automatic से कौन करिवो? Parent class of function call करिवो. एठी देखिबो I am employee, तापर देखिबो I am manager. बुझिला? नाइ सर बुझिलानी. सर से केमिति चाइल्ड क्लास रो फंक्शन टा को कॉल करछि बुझिलानी. एटा रेफरेंस टा में चेंज कले ना, एम्प्लॉई EM equals to new manager, EM dot work माने हमें एम्प्लॉई क्लास रा ऑब्जेक्ट बनेले, रेफरेंस देले चाइल्ड क्लास को. जदि हमें EM dot work लिखिबा से ऑटोमेटिक कोन करिवो, चाइल्ड क्लास रा फंक्शन ही कॉल करिवो, कारण हमें एटी जहा को रेफरेंस दिया हिची ताकू ही कॉल करिवो. ओ बुझिला? बुझिल सर बुझिल. आज्ञा आज्ञा आज्ञा. किंतु सेही जब सेही EM ऑब्जेक्ट रे जदि मो मैनेज फंक्शन को कॉल करि थांदी ताले मते एरर शो करि थांदा. बुझिला? ओहो बुझिले सर. हां त एबे मु कोन करिवि? सर टाइम एरर का इशू करथुंदा, कारण मैनेज फंक्शन टा पेरेंट क्लास रे नाही, मैनेज क्लास टा पेरेंट क्लास रे नाही. तर मु जदि जोटा कॉमन अछि सेटा को ही कॉल करला हो, कॉल करले हबो. ताले जदि मु मैनेज फंक्शन को जदि कॉल करिवि ताले केमिति करिवि? ताले मु एठी गोटे कास्टिंग कली, मैनेजर एम, मैनेजर को ब्रैकेट भीतर पास कली, EM टा को रेफरेंस दे देली मैनेज को. एटा को जे ऑब्जेक्ट कास्टिंग, मैनेजर एम, मैनेजर टा रहला ब्रैकेट भीतर EM. तो EM is giving a reference to the M. Through the M we are calling manage function. Then तम सर एम टा जो सेटा नो ऑब्जेक्ट बनेले कि ना ऑब्जेक्ट बनेली सिना, किंतु ऑब्जेक्ट रे मेमोरी एलोकेशन कलिनी. मु जदि न्यू कीवर्ड लेखि तांती ताले मोर मेमोरी हां एलोकेशन, ताले मेमोरी एलोकेट था. एठी मु न्यू कीवर्ड लेखिनी तो मेमोरी एलोकेशन हबार कोनोसी प्रश्न नै. बुझिला? आज्ञा. तापर सेही ऑब्जेक्ट रे मु मैनेज फंक्शन को कॉल कर देबी. बुझिला? आज्ञा सर. एटा हां सर बुझिला. थैंक यू. just a technical part. Okay, एटा टिके न बुझिले. So I am an employee, I am a manager, then managing. बुझिला? आज्ञा सर. Okay. हां सर बुझिला. Okay. You can see the video. I will send it. Then after that, if you have any doubt, then again I will discuss. Okay. आज्ञा सर. चलो. यस सर. यस सर. थैंक यू सर.